Hello students, myself Nilesh sir welcomes you on the behalf of Osam Pathak School for the 8 online lectures of Maths. We are going to deal chapter number 1, that is number systems. In the last lecture I have explained you how to find out the rational numbers like that. Now we have dealt exercise 1.3 in the last lecture. Today we are going to start our exercise number 1.5. In the 1.5 it is about the rational and irrational numbers. So what are rational numbers? Again comes, so rational numbers are the numbers which are in the form of P upon Q, where Q is not equals to 0, and irrational numbers are the numbers which are not in the form of P by Q. That one, the difference between rational and irrational, P upon Q, and second one will be not P upon Q. So you can see in your textbook exercise 1.5, it has been given, classify the following numbers as rational or irrational. The first question was been given here. That question number 1, we have to find it out whether it is rational number or not. It's 2 minus root 3 minus 5. It's 2 minus root 5. The second one, 3 plus root 23 bracket minus root 23. Third one, it is 2 upon root 7 multiply with 7 upon root 7, and the fourth one is 1 upon root 2, and the fifth one is pi, 2 pi. Now we have to find it out whether it is a rational or irrational number. But I have already explained you, rational means which are in the form of P upon Q. जहाँ पर अगर कोई क्वेश्चंस में रूट रह जाता है, जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, तो वो इरेशनल नंबर्स होते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए कि 2 माइनस रूट 5, फर्स्ट पार्ट इज गिवन कि 2 माइनस रूट 5. तो देखिए 2 इज ए नंबर, नेचुरल नंबर, बट रूट 5 इज इरेशनल. रूट 5 क्या है? इरेशनल है. तो देयरफॉर 2 माइनस रूट 5 इज इरेशनल नंबर. क्योंकि मैंने बताया था कि रेशनल और इरेशनल अगर चाहे किसी भी फॉर्म में हो, मल्टीप्लाई फॉर्म में, एडिशंस फॉर्म में, डिविजन्स फॉर्म में या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में, वो हमेशा इरेशनल्स होता है. सेकेंड वन, अगर हम लोग ब्रैकेट से बाहर इसको निकालें कि 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, ये माइनस प्लस कैंसल, तो वी गॉट 3. और 3 जो है वो रूट के फॉर्म में नहीं होने के कारण इट इज रैशनल नंबर, क्योंकि ये रूट 3 नहीं है, सिर्फ 3 है. 3 होने के कारण जो है कि 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 विल बी रैशनल. अब इधर देखिए, नाउ इन दिस क्वेश्चन 2 अपॉन रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 7, 7 अपॉन रूट 7, रूट 7 इफ वी कैंसिल इट आउट वी गॉट 2 अपॉन 7 मीन्स P अपॉन Q. कोई भी नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में होता है तो वो ऑटोमेटिकली रैशनल नंबर बन जाता है. तो देयरफॉर इट इज रैशनल नंबर. ये भी रैशनल नंबर हो जाएगा क्योंकि देखो रूट्स नहीं है. नाउ बेटा ओवर हियर, नाउ 1 अपॉन रूट 2, यू कैन सी ओवर हियर कि वी हैव गिवन कि 1 इज अ रैशनल बट रूट 2 इज इरेशनल, क्योंकि रूट 2 क्या होता है? इरेशनल नंबर. देयरफॉर रैशनल और इरेशनल एक भी अगर रह जाए तो 1 अपॉन रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर.
क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसका फॉर्म हो जाता है कि रूट टू इरेशनल हो जाता है, तो हम लोग का जो क्वेश्चन जो है वो जीरोज नहीं हो रहा है, इसलिए वी आर गेटिंग 1 अपॉन रूट टू इज एन इरेशनल नंबर. नाउ लास्ट वन, 2 मल्टीप्लाई विथ पाई. ऑलरेडी वी नो दैट पाई इज एन इरेशनल नंबर, तो 2 इज अ रेशनल नंबर. 2 जो है वो रेशनल नंबर है एंड पाई इज इरेशनल नंबर. पाई जो है वो इरेशनल है, तो देयरफॉर मैंने बताया अभी भी कि रेशनल और इरेशनल चाहे किसी भी फॉर्म में हो, चाहे एडिशन के फॉर्म में, चाहे डिवीज़न, चाहे सब्ट्रैक्शंस या मल्टीप्लिकेशंस, वो हमेशा इरेशनल हो जाता है. तो देयरफॉर 2 पाई इज एन irrational number. So this was your question number 1 of exercise 1.5. फिर से हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं. क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रेशनल और इरेशनल. तो देखिए रूट 5, 2 देखिए रेशनल है, रूट 5 इरेशनल, ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा नंबर इरेशनल. ये प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 कट जाएगा, तो वी गॉट द आंसर 3. 3 अकेला नंबर है इसलिए रेशनल बन जाएगा. ये रूट 7, ये रूट 7 कैंसिल कर दिया, तो 2/7, तो 2/7 जो है वो p/q के फॉर्म में है, इसलिए वो रेशनल. 1 क्या है? रेशनल नंबर, नॉन जीरो मतलब रेशनल है. बट रूट 2 इज इरेशनल, तो 1/√2 इज एन इरेशनल. And here 2 pi, तो 2 is an rational number because 2 non-zero है, 0 से 2 is a rational number and pi is an irrational number. So therefore 2 pi is an irrational number. So this was your question number 1. Have you any doubt over here? Now what is question number 2? Now we are moving with the question number 2. This was question number 1. Students, you have to always remember that rational numbers are always in the form of p/q. p/q के फॉर्म में होगा, वो रेशनल्स होता है और रूट नहीं होना चाहिए. रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 all are irrational numbers. Now question number 2. It is simplify. Simplify means we have to solve. 4 questions are being given to you. I am solving each one. The first one is 3 plus root 3, 2 plus root 2. The second one, 3 plus root 3 and 3 minus root 3. The third one, we are writing down the third question is root 5 plus root 2 whole square, and the fourth one, the question has been given 5 minus root 5 minus root 2 and root 5 plus root 2. Students, you have been given the 4 questions over here. First question, it was 3 plus root 3 multiply with 2 plus root 2, 3 plus root 3, 3 minus root 3, root 5 plus root 2 whole square, and the last one root 5 minus root 2, root 5 plus root 2. Now we will do the simplifications. 3 into 2, 6, 3 into 2 root 2, 3 root 2, 2 into root 3, 2 root 3, and root 2 into root 3, it will be root 6. Now this is not, there you can see कोई भी like terms नहीं है. So this will be the answer, first part. Now here you can see it is a plus b, a minus b. A plus b, a minus b, it is an identity of a square minus b square. तो a की जगह पर 3 and b की जगह पर root 3. So that will be a square minus b square, that is 3 square minus root 3 square. 3 square will be 9
root 3. When a root multiply by same root, the root goes out. Root 3 into root 3, root 9. Root 9 will be 3. So 9 minus 3, 6. This was question number 2. Now here you can see an identity. Which one identity? A plus B whole square. So what is A plus B whole square? So A plus B whole square equals to A square plus 2AB plus B square. This was an identity which you have studied in standard 8. Now what is the value of A? Over A is root 5 and B is root 2. That will be root 5 square 2 into root 5 into root 2 plus root 2 square. A square plus 2AB plus B square. Root 5 into root 5, 5, 2, root 10, root 2 into root 2, 2. Now add the like terms. 5 plus 2, 7 plus 2 root 10. So this was your third answer. 7 plus 2 root 10. Just we are doing the according to the tricks. Now it is again here you can see A plus B, A minus B. A minus B, A plus B, it is A square minus B square. A square minus B square, that is A plus B, A minus B. So A will be root 5, so it will be root 5 square minus root 2 square. Root 5 into root 5, it will be root 25. Root 25 when comes out from the root, it becomes 5. And root 2 into root 2, root 4. Root 4 when it comes out, it becomes 2. So 5 minus 2, it will be 3. So this is a way of getting out the simplified part. What we have done, again I am saying, just multiplied. 3 into 2, 6. 3 into root 2, 3 root 2. 2 into root 3, 2 root 3, and root 3 and root 2. When we multiplied, 2, 3 just 6, but root is over here. A plus B, A minus B, A square minus B square. Value of A is 3, value of B is root 3. 3 into 3, 9. Root 3 into root 3, 3. 9 minus 3, 6. Here we are using the identity A plus B whole square. A plus B whole square, A square plus 2AB plus B square. The value of A is root 5, value of B is root 2. The A square plus 2AB plus B square. It is plus sign over here. Root 5 into root 5, 5. 2 into root 5 into root 2, 2 root 10. And root 2 into root 2, 2. 5 plus 2, 7 plus 2 root 10. And the last one again A minus B, A plus B. We have just doing A square minus B square. That is A plus B, A minus B. So root 5 into root 5, 5. Root 2 into root 2, 2. 5 minus 2 will be 3. So this was your question number 2. Are you having any doubts over here? Now students, question number 3. Before question number 3, you have to know the concept. What the question number 3 been given to you. See the textbook, question number 3. Recall pi is defined as the ratio of the circumference to the circle to the diameter. Now just I am erasing this thing, then I am explaining you question number 3. By the time just read question number 3 बेटा. तब तक question number 3 को एक बार read कीजिए everyone with your textbook, from your textbook. Now see, what is question number 3 over here? Question number 3, recall pi is defined as the ratio of the circumference to the ratio of the diameter. Then pi equals to circumference upon diameter. This seems to contradict the fact that pi is an irrational number. So how can you solve these contradictions? So already we know that, but already we are being given, you look at over here, the solutions is
कि pi equals to circumference upon diameter. You are being given these things, and we are being given that, as we know that, look at over here, I'm just solving this thing. As we know that the quotient of a non-zero number, non-zero rational number, and irrational number is always irrational number. So there is no contradiction. I am writing down and I will explain you the concept. No contradictions, as either C or D are irrational. Therefore, pi is an irrational number. Now, listen over here. What we have written, as we know that this was been given to you, pi equals to C, that is circumference, and D, that is diameter. You are being given pi equals to circumference upon diameter. Now you have to prove that whether pi is an irrational number. So as we know that quotient of a non-zero rational number, non-zero means a rational number, that is P upon Q, where the Q cannot be equals to 0. So here given, as we know that the quotient of a non-zero rational number and irrational number is always irrational. Means I have already told you, rational number with irrational either in the form of addition, मल्टीप्लिकेशंस, डिविजन्स और सब्ट्रैक्शंस, वेदर इट इज़, अगर वो रेशनल और इरेशनल, उसके बीच में चाहे कोई भी साइन हो, चाहे मल्टीप्लाई का, चाहे डिवीज़न का, चाहे एडिशंस का या सब्ट्रैक्शंस का, तो जो पूरा नंबर होगा वो इरेशनल हो जाता है. सो हियर देयर इज़ नो कॉन्ट्राडिक्शंस, कोई कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं है. क्यों? क्योंकि सी और डी दोनों ही इरेशनल के रूप में है. Therefore, pi is an irrational number. This was your question number 3 of your textbook. Means you have to understood pi. Already हम लोग ने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि डू यू नो बेटा, वैल्यू ऑफ पाई इज, अगर आप पाई के वैल्यू डिवाइड करो 22/7 डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 1,0,0,256. इतना टाइम्स वो डिवाइड करने के बाद भी नंबर रिकरिंग नहीं हो रहा था. पाई का जब डिविजन्स कर रहे हो 22/7, यू आर नॉट गेटिंग द आंसर. इट इज़ इनडिफिनिट पार्ट. कितने बार प्लेस मूव किया गया है, आई एम गिविंग यू कॉन्सेप्ट ऑफ दिस थिंग, कि अगर हम लोग पाई का वैल्यू निकालें, इफ यू आर टेकिंग आउट द वैल्यू ऑफ पाई, तो दैट इज 3.14,159,26535. ये अभी भी कंटिन्यू होते चले जाएगा अप टू पाई का जो है 1,0,0,256 डिजिट्स तक. लिसन द थिंग्स, इतने डिजिट, दिस इज 1 2 3 4, उतने डिजिट तक उसका नंबर रिपीट ही नहीं हुआ. मीन्स 1 2 3 1 2 3 1 2 3 नहीं आ रहा, इट इज गोइंग ऑन. तो इसीलिए पाई जो है इज एन इरेशनल नंबर. Okay, you have understood about the rational and irrational numbers. Then we have done the simplifications, and now I have shown you pi means circumference upon diameter. Okay, students, thank you everyone.